जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. Unless one surrenders unto the lotus feet of the personality of Godhead, it is sure and certain that one will be bewildered, even if he happens to be a great mind. Only when great minds surrender unto the lotus feet of Vasudeva and know fully that Vasudeva is the cause of all causes, as confirmed in Bhagavad Gita 7.19. Can they become Mahatmas are the truly broad-minded, but such broad-minded Mahatmas are rarely seen. Only they, however, can understand that the Supreme Lord, the absolute personality of Godhead, is the primeval cause of all creation. He is the ultimate truth, because all other truths are dependent on him, and because he is the source of everyone's knowledge, he is omniscient. There is no illusion for him as there is for the relative knower. Some Mayavadi scholars argue that Srimad Bhagavatam was not compiled by Srila Vedvyas, and some suggest that the book is a modern creation written by someone named Vopadeva. In order to refute this meaningless argument, Sridhara Swami Sridhara Swami points out that many of the oldest Purans make reference to Srimad Bhagavatam. The first sloka or verse of Srimad Bhagavatam begins with the Gayatri mantra, and there is references to this in the Matsya Puran, the oldest Puran. In that Puran, it is said about the Bhagavatam that in it there are many narrations and spiritual instruction that is being with the Gayatri mantra, and that is contains the history of Vritashura. It is also said that whoever makes a gift of this great work on a full moon day attend to the highest perfection of life and goes back to Godhead. There is also reference to Srimad Bhagavatam in another Purans, which even indicate that the work consists of 12 cantos and 18,000 slokas. In the Padma Puran, there is also references to Srimad Bhagavatam during a conversation between Gautam and Maharaja Ambarisa. Now, the king was advised to read Srimad Bhagavatam regularly if he at all desired liberations from material bondage. Under these circumstance, there is no doubt regarding the authority of Srimad Bhagavatam for the past 500 years since the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Many scholars have made elaborate commentaries upon Srimad Bhagavatam and have Mataji call कीजिए have cannot be impersonal and have a sense of pure sex life. The impersonal moist philosophy has given an
indirect impetus to abominable mundane sex, because it overly stressed the impersonality of the ultimate truth. The result is that men who lack knowledge have accepted perverted material sex life as all in all. Because they have no information of the actual spiritual form of sex. There is a distinction between sex in the deceased condition of material life and sex in the spiritual existence. Srimad Bhagavatam gradually elevates the unbiased reader to the highest perfectional stage of transcendental, above the three kinds of material activities, namely fruitive action, speculative philosophy, and worship of functional deities, indicates in the Vedas. Srimad Bhagavatam in the embodiment of devotional service to the Supreme Personality of Godhead Krishna, and is therefore situated in a position superior to other Vedic literatures. Religion Religion includes four primary subjects: pious activities, economic development, satisfaction of the senses, and liberation from material bondage. Religious life is distinct from the irreligious life of barbarism. Indeed, it may be said that human life actually begins with religion. The four principles of animal life, eating, sleeping, defending, and mating, are common to both the animals and the human beings. But the religion is the special concern of human beings, since uh, human life without religion is no better than animal life. In real human society, there is some form of religion aiming at self-realization and referring to one's eternal relationship with God. In the lower stage of human civilization, there is always competition between men in their attempt to dominate material nature. In other words, there is continuous rivalry in an attempt to satisfy the senses. Thus, driven by sense gratificatory consciousness, men perform religious rituals and pious activities with the aim of acquiring some material gain. But if such material gain is obtainable in another way, the so-called religion is neglected. This can be seen in modern human civilization. Since the economic desires of the people appear to be fulfilled in another way, no one is interested in religion now. The churches, mosques, and temples are practically vacant, for people are more interested in factories, shops, and cinema than in the religious places erected by their forefathers. This definitely proves that religious rituals are generally performed for the sake of economic development, which is needed for sense gratification. And when one is baffled in his attempt to attain sense gratification, he takes to the cause of salvation in order to become one with the Supreme Whole. All these activities arise with the same aim in view: sense gratification. In the Vedas, the four primary subjects mentioned above the prescribed in a regulative way, so that there will not be undue competition for sense gratification. But Srimad Bhagavatam is transcendental to all these sense gratifying activities of the material world. It is a purely transcendental literature, understandable by the devotees of the Lord, who are above the competition for senses gratification in the material world. There is keen competition between animals, between man, between communities, and even between nation, in an attempt to gratify the senses. But the devotees of the Lord are above all this. Devotees have no need to compete with materialistic, because they are
on the path back to Godhead, back home where everything is eternal and fully blissful. Such transcendentalists are 100% non-atheist and are therefore pure in heart, because everyone in the material world is envious and there is competition, but the transcendentalists are devotee of the Lord, are not only free from all material envy, but are also kind to everyone in an attempt to establish a competitionless society with God in the center. The socialist idea of a society devoid of competitions is artificial, because even in the socialist states there is competition for the post of dictator. In It is a fact therefore that senses gratification is the central principle of materialistic life, whether based on the Vedas or simply on common human activities. There are three division of the Vedas. The first division, the karma kanda, recommends fruitive activities by which people can advance to higher planets. Above this is the Upasana Kand, which recommends worship of the various demigods for the purpose of attending their planets. Finally, there is the Janana Kand, which recommends activities that enable one to reach the absolute truth and realize his impersonal future in order to become one with him. But the impersonal aspect of the absolute truth is not the last word. Above the impersonal feature is the Paramatma, or is the super soul, and above that is above absolute truth is not the last, and above that is the that is the personal aspect of the absolute truth. Srimad Bhagavatam give information about the personal qualities of absolute truth. Beyond the impersonal aspect, topics concerning these qualities are greater than topics is impersonal philosophical speculation. Consequently, Srimad Bhagavatam is given higher status than the Janana Kand, division of the Vedas. Srimad Bhagavatam is also greater than the Karm Kand and Upasana Kand division, because it recommends the worship of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the divine son of Vasudeva. The Karma Kand division of the Vedas is fraud with competition to reach heavenly planets for better senses gratification, and this competition is also seen in the Janana Kand and Upashna Kand division. Srimad Bhagavatam is above all these because it aims only at the supreme truth, the substance or root of all categories. In other words, Bhagavatam, we can know the substance as well as the relativities in their true sense and perspective. The substance is the absolute truth, the supreme personality of Godhead, and the relativities are the different forms of energies which emanate from Him. Since the living entities are also His energies, there is nothing really different from the substance. At the same time, the energies are different from the substance. This conception is not self-contradictory. Srimad Bhagavatam explicitly deals with this simultaneously one and different philosophy. A philosophy also found in the Vedas, Vedanta Sutra, which begins with Janmadesya Sutra. Knowledge of the simultaneously one and different nature of absolute truth has been imparted for the well-being of everyone. Mental speculators mislead people by trying to establish the energy of the Lord as absolute. But when the truth of simultaneous oneness and difference
is understood that truth is more pleasing than the imperfect conceptions of monism and dualism. By understanding the Lord's simultaneous oneness and difference from his creation, one can immediately attain freedom from the threefold miseries inflicted by the body and mind, by other living entities, by nature, acts of nature over which we have no control. Srimad Bhagavatam beings with the surrender of the living entities unto the absolute person. Thus, this surrender is met with full awareness of the devotee's oneness with the absolute person, and at the same time his eternal position of servitorship towards him. In the material conception, one falsely thinks himself the lord of all. He survives consequently. Consequently, he is always troubled by the threefold miseries of life. But as soon as one comes to know his real position in transcendental service, he at once become freed from all the above mentioned threefold miseries. The position of uh, servitor is wasted in the material conception of life. In an attempt to dominate material nature, the living entity is forced to offer his service to the relative material energy. When this service is transferred to the Lord is in pure consciousness of spiritual identity, the living entity at once becomes free from the encumbrances of material affliction. Over and above this, Srimad Bhagavatam is the personal commentary on the Vedanta Sutra by Vedvyas. After he had attained maturity in spiritual realization, he was able to write it by the mercy of Narad. Srila Vedvyas is an incarnation of Narayan, and the personality of Godhead. Therefore, there is no question about his authority. Although he is the author of all Vedic literature, he especially recommends the study of Srimad Bhagavatam above all other books. In other Purans, various methods for worshipping demigods are mentioned, but in Srimad Bhagavatam, only worship of the Supreme Personality of Godhead is mentioned. The Supreme Lord is the whole body, and the demigods are different parts of that body. Thus, one who worship the Supreme Lord need not worship the demigods, for the Supreme Lord is at once fixed in one's heart. Lord Chaitanya Mahaprabhu distinguished Srimad Bhagavatam from all Purans by recommending it as the spotless Puran. The transcendental message is received through the ears by the method of submissive hearing. A challenging attitude cannot help one receive or realize the transcendental message. Therefore, in the second verse of Srimad Bhagavatam, the word shushru is used. This word indicates that one should be eager to hear the transcendental message. The desire to hear with interest is the primary qualification for assimilating transcendental knowledge. Unfortunately, few people are interested in patiently hearing the message of Srimad Bhagavatam. The process is simple, but the application is difficult. Those who are unfortunate will find time to hear ordinary social and political topics and all sorts of ideal talk. But when they are invited to join an assembly of devotees to hear Srimad Bhagavatam, they are reluctant to attend, or they will indulge in hearing portions of Srimad Bhagavatam they are unfit to hear. Uh, Professional reciters of Srimad Bhagavatam
indulge in reciting the portions dealing with the confidential pastimes of the Supreme Lord. Those portions appear to be six literatures. Srimad Bhagavatam is meant to be heard from this beginning, and those who are fit to assimilate the message of Bhagavatam are mentioned in the very beginning. The bona fide audience fit to hear Srimad Bhagavatam consists of those who have performed many pious deeds, but any intelligent person by thoughtful discretion can come to believe in the assurance of the great sage Vyasadeva and patiently hear the message of Srimad Bhagavatam in order to realize the Supreme Personality of Godhead directly. One need not struggle through the different Vedic stages of realization, for one can quickly be lifted to the position of Paramhamsa simply by agreeing to patiently hear the message of Srimad Bhagavatam. The sages of Naimisharanya told Suta Goswami that they intensely desired to understand Srimad Bhagavatam. They were hearing from Suta Goswami about Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and they were never satiated by these discussions. The people who are really attached to Krishna never stop wanting to hear more and more about him. Lord Chaitanya therefore advised Prakashananda Saraswati always read Srimad Bhagavatam and try to understand each and every verse. Then you will actually understand the Brahma Sutra. You say that you are very eager to study the Vedanta Sutra, but you cannot study the Vedanta Sutra without understanding Srimad Bhagavatam. He also advised Prakashananda Saraswati to always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. By doing this, you will very easily be liberated. After liberation, you will be eligible to achieve the highest goal of life, love of Godhead. The Lord then recited many verses from authoritative scriptures like Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Gita, and the Narsimha Upanishad. First, he quoted this verse from Bhagavad Gita: Brahma Bhuta Prasannatma Nasho Chatina Kankshati Samasarveshu Bhuteshu Madbhaktin Navade Param. When one actually becomes self-realized, knowing that he is Brahma, he becomes happy and joyful, and he no longer feels any lamentation or hankering. Such a person sees all living entities on an equal level, and he becomes the pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. Next, he quoted a statement from Shankaracharya's commentary on the Narsimha Upanishad. The statement says that when a person is actually liberated, he can understand the transcendental pastimes of the Supreme Lord and thus engage in his devotional service. Lord Chaitanya also quoted a verse from the second canto of Srimad Bhagavatam, in which Shukadev Goswami states that although he was elevated to the liberated stage and free from the clutches of Maya, he was still attracted by the transcendental pastimes of Krishna. Consequently, he studied Srimad Bhagavatam from his great father Vyasadeva. Next, Lord Chaitanya quoted another shloka from Srimad Bhagavatam which deals with the Kumaras. When the Kumaras entered the temple of the Lord, they were attracted by the aroma of the flowers and tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord with the pulp of sandalwood. Simply by the Kumaras smelling the aroma of these offerings, their mind turned to the service of the Supreme Lord. Although the Kumaras were already liberated souls, it is stated elsewhere in the Bhagavatam that even if one is a liberated soul, he is actually free from material contamination. He can still be attracted to rendering the devotional service to the Supreme Lord that is causeless and unhampered by any material propensity. This is because Lord is so attractive, and because he is so attractive, he is called Krishna. In this way, Lord Chaitanya began to discuss the Atma Rama verse from Srimad Bhagavatam with Prakashananda Saraswati. Lord Chaitanya admired the Maharashtrian Brahman relative that the Lord had earlier explained this verse in 61 different ways. Everyone assembled was very eager to hear the different version of the Lord explanation of the Atmarama Shloka. And since they were so eager, Lord Chaitanya again explained the Shloka in the same way that he had explained it to Sanatana Goswami. Everyone who heard the explanation of the Atmarama Shloka was amazed. Indeed, everyone considered Lord Chaitanya to be none other than Sri Krishna himself. Very good.
तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को पूरा जो समरी बताई, क्या बताया उन्होंने कि अगर आप वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र को समझना चाहते हैं तो आपको श्रीमद् भागवतम का एक एक वर्ड अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ईगर हैं वेदांत सूत्र पढ़ने के लिए, तो इसलिए आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना श्रीमद् भागवतम के आप वेदांत सूत्र को नहीं समझ सकते। और वो भी क्या बोलते हैं कि ऑलवेज स्टैंड हरे कृष्ण महामंत्र। तो इससे क्या होगा, आप लिबरेशन को प्राप्त करेंगे, यानी कि अल्टीमेटली मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद देखिए, हम चैतन्य महाप्रभु से सीख सकते हैं कि वो भी हर एक स्टेटमेंट का उनके पास कोई ना कोई रेफरेंस होता था। तो वो रेफरेंस देते हैं श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से। तो भगवत गीता से वो रेफरेंस देते हैं कि जो भी ये समझ लेता है कि एक्चुअली में वो कौन है, उसका रिलेशनशिप क्या है भगवान से, तो वो क्या रहता है, हमेशा खुश रहता है, उसको कोई हैंकरिंग नहीं होती, कोई लेमेंटेशन नहीं होता। तो वो ऐसा जो पर्सन होता है वो कभी खुद को भगवान के लेवल पे नहीं देखता, बट खुद को क्या मानता है, एज अ सर्वेंट। सो ही कोटेड नरसिम्हा तापनी उपनिषद से, वो बताते हैं कि द स्टेटमेंट सेज दैट व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली लिबरेटेड, जब कोई इंसान एक्चुअली में लिबरेटेड हो जाता है मटेरियल कंटामिनेशन से। अभी हम क्या है, मटेरियल कंटामिनेशन में है हमारी जो चेतना है, इस वजह से क्या होता है, हम भक्ति के बारे में भी सोचते हैं, साथ ही साथ अपनी मटेरियल चीजों के बारे में भी सोचते हैं। बट जो एक्चुअली में लिबरेटेड हो जाता है वो क्या करता है, वो भगवान के पास टाइम्स को समझ सकता है और उनकी भक्ति में रख सकता है। फिर वो भागवतम से कोट करते हैं कि एक्चुअल में जो लिबरेटेड सोल है, जैसे सुखदेव गोस्वामी जब अपनी माता के गर्भ से निकलते हैं, बेसिकली व्यासदेव की जो पत्नी है उनके गर्भ से, तो अराउंड 18 मंथ्स बाद निकलते हैं वो। तो फिर उसके बाद जब वो निकलते, तो निकलते ही वो जंगल में भागने लगते हैं कि मुझे माया ना पकड़ ले। तो उनके पीछे से व्यासदेव जी, जो उनके पिता हैं, वो उनको बुलाते हैं कि पुत्र रुकिए रुकिए, तो वो नहीं रुकते हैं। तो लेकिन जब वो सुनते हैं भागवतम के श्लोक, अब उनको वापस कैसे लेके आया जाए, तो व्यासदेव अपने कुछ शिष्य को भेजते हैं जो कि भागवतम के श्लोक रिसाइट करते हैं। तो पहला वो रिसाइट करते हैं भगवान की सुंदरता के बारे में, तो भगवान कितने सुंदर है। तो व्यासदेव मतलब सुखदेव गोस्वामी को लगा कि ठीक है, होगा कोई। लेकिन फिर जब उनकी क्वालिटीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जो पूतना वाला जो श्लोका है, कि कैसे भगवान ने एक ऐसी पूतना जो उनको जहर देने आई थी, उनको भी उन्होंने अपने माँ के समान उनको अपना वो दिया, पोजीशन दी। तो फिर क्या हुआ, वो सुखदेव गोस्वामी ये सुन करके, भागवतम की श्लोका सुन करके अट्रैक्ट हुए कृष्णा की तरफ। और फिर वो पूछते हैं उनसे कि आपके गुरु कौन है, फिर व्यासदेव बताते हैं कि मैं ही हूँ इनका गुरु और जो मेरे पुत्र हो। तो फिर इस तरह से वो व्यासदेव से नॉलेज लेते हैं। फिर उसके बाद में चतुष कुमार, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 4 पुत्र, उनके बारे में आता है। तो ये 4 पुत्र भी कौन है, ये लिबरेटेड है। अगर हमने देखी होगी विष्णु जी की फोटो, एक 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ में, तो वो क्या चतुष कुमार है। तो ऑल्दो वो बच्चे जैसे दिखते हैं और कुछ पहनते नहीं है, बट वो बहुत ही एलिवेटेड स्तर पर है। तो वो भी एलिवेटेड थे, लेकिन जब वो वैकुंठ में भगवान के चरणों में हम तुलसी पत्र ऑफर करते हैं चंदन लगा करके, जब वो उसकी स्मेल लेते हैं और वो तुलसी पत्र की, तो क्या होता है, वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ऑल्सो कि वो ऑलरेडी लिबरेटेड है, लेकिन अब क्या होता है, वो भगवान की सर्विस के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर इसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु भागवतम का जो वो श्लोका है, आत्माराम वर्ष, वो प्रकाशानंद सरस्वती को एक्सप्लेन करते हैं। तो उनके साथ एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था। तो सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ने भी ऑस्टेरिटी एक्सेप्ट की थी। जब चैतन्य महाप्रभु गए थे वहां पर, तो उन्होंने जो प्रसाद लिया था वो एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के घर पर लिया था। हम सोच सकते हैं कि इसमें क्या ऑस्टेरिटी है। तो एक्चुअली में देखिए, चैतन्य महाप्रभु बिलोंग किस टाइप करते हैं, लाइक एक्सटर्नली वेस्ट साइड से, लाइक ईस्ट साइड, बंगाल साइड से। तो वहां पर क्या होता है, हम ईस्टर्न साइड वाले क्या होते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्रियन पीपल होते हैं, वो उनका जो खाना पीना है बिल्कुल अलग है, मसाला वगैरह सब कुछ अलग है। तो वो ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं। तो लाइक एक तरह से ऑस्टेरिटी हुई। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर हैं, हम बिल्कुल तीखा नहीं खाते, और हम साउथ इंडिया में जाए तो वहाँ पे कितना तीखा सांभर होता है। तो एक तरह से ये हमारे लिए ऑस्टेरिटी होगी। तो चैतन्य महाप्रभु उन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के घर पर रुके थे। और फिर जब वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण सुनते हैं कि भगवान वापस से ये श्लोका डिस्क्राइब करने वाले हैं, तो उन्हें वही पास टाइम याद आता है कि कैसे उन्होंने सनातन गोस्वामी को 61 डिफरेंट वेज में वो आत्माराम श्लोका एक्सप्लेन किया था। तो फिर इंडीड एवरीवन कंसीडर्ड लॉर्ड चैतन्य। तो इसकी तरह से वो सभी लोग सुनते हैं और वो चैतन्य महाप्रभु को एक एज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ट्रीट करते हैं। और
इसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ थे कि बहुत कम ही लोग पीपल इंटरेस्टेड होते हैं आजकल भागवतम के या भगवान से रिलेटेड टॉपिक्स सुनने के लिए, क्योंकि या फिर वो किससे सुनेंगे, या तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, या तो फिर अगर वो सुनेंगे तो किससे जाकर के सुनेंगे जो कि भगवान के रास लीला पास टाइम्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जो बॉनिफाइड होते हैं वो क्या करते हैं, भागवतम को स्टार्टिंग से डिस्क्राइब करते हैं, और वो कभी भी रासलीला के पास टाइम्स को इतना गहराई से टच नहीं करते, क्योंकि जो ऑडियंस है वो समझने लायक नहीं है। अगर ऑडियंस समझने लायक होगी तो स्पीकर उसको डिस्क्राइब करेगा। और फिर उसमें आता है कि किसी को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है पूरे वेदास पढ़ने की, क्योंकि one can be one can quickly be lifted to the position of Paramhansa simply by agreeing to patiently hear the message of श्रीमद् भागवतम। तो हमें सारे वेदास स्क्रिप्चर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारी जिंदगी सफल है। तो सेजेस ऑफ नैमिषारण्य, तो वो जो है शुभदेव गोस्वामी से सुनते हैं, और इसमें क्या बताया जा रहा है कि people who are really attached to Krishna never stop wanting to hear more and more about him। और अभी ऐसा नहीं है कि हम कुछ सारे काम छोड़ करके सिर्फ हियरिंग करें, हमें अपनी बौद्धिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी है, और एट द सेम टाइम वी शुड हैव अटैचमेंट टू हियरिंग द पास्टेंस ऑफ कृष्णा। देन उसके बाद में आता है कि श्रीमद् भागवतम क्या है, पर्सनल कमेंट्री है। ये किसी ने लिखा है इससे पहले प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो भागवतम है ये श्रील व्यासदेव ने नहीं लिखी है, ये किसी और ने लिखी है। और कहाँ गया वो पैराग्राफ, तो वो बताते हैं कि किसी वोपदेव ने लिखी है। तो इसको रिफ्यूट करने के लिए हमारे पास क्या है, श्रील श्रीधर स्वामी जो है इनकी भी कमेंट्री है भागवतम के ऊपर, वैष्णव आचार्य हैं। तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो पुराने जो पुराणास है, तो उसमें क्या बताया गया है, जो मध्य पुराण है उसमें बताया गया है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो सबसे पुराना स्क्रिप्चर है। किससे शुरू होता है, गायत्री मंत्र से। और लाइक मतलब जो फर्स्ट श्लोक है ना उसमें धीमहि करके वर्ड आता है, तो फिर उसके बारे में बताते हैं। और इट कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ वृत्तासुर, वृत्तासुर की पास टाइम आता है भागवतम में। और जो भी भागवतम को पूर्ण लाइक पूर्ण चंद्र, जो भद्र पूर्णिमा के दिन अगर कोई इसको डोनेट करता है या इसका किसी को गिफ्ट करता है तो क्या होता है, वो भगवत धाम जाता है, उसका कंफर्म है जाना। सो दिस इज देयर इज आल्सो रेफरेंस टू श्रीमद् भागवतम इन अदर पुराणास। बाकी अदर पुराणास में भी उसका वर्णन है भागवतम का। तो अगर कोई बोलता है कि ये भागवतम व्यासदेव ने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, तो हमारे पास ये कोट्स है जो हम इसको किसी को बता सकते हैं। और भागवतम में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोकास है। पद्म पुराण में भी इसका कन्वर्सेशन है, इसका रेफरेंस है कि गौतम और महाराज अम्बरीश इनके बीच में जो कन्वर्सेशन है। तो किंग को क्या महाराज अम्बरीश को क्या एडवाइस किया गया था कि आप रेगुलरली श्रीमद् भागवतम को सुनिए, क्योंकि देर इज नो डाउट रिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ श्रीमद् भागवतम। और पिछले 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम, वो साउथ इंडिया से श्रीमद् भागवतम को लेकर के आए थे। तो पहले के टाइम में तो इतनी बुक्स थी नहीं, तो अगर कोई एक बुक भी आ जाती थी ना तो वो उसके लिए इतना लाइक उसको एकदम सर आंखों पर रखते थे, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, सब लोग लेख लिख करके उसको लेकर के जाते थे। और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिस्क्राइब करते हैं कि लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना कि ओशो फिलोसफी क्या है, सेक्स साइकोलॉजी है, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर से वो इच्छा खत्म हो जाएगी। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम मान लीजिए आज हमने 10 गुलाब जामुन खा लिए तो हमारा मन भर जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कुछ महीनों बाद हमारा मन नहीं करेगा गुलाब जामुन खाने का। और फिर जो हम मटेरियल लाइफ में जो हम देखते हैं इंटरकोर्स, वो बहुत पूरी तरीके से डिफरेंट है। मटेरियल लाइफ में क्या है, हम शारीरिक रूप से एक दूसरे को देखते हैं, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये चीज़ बिल्कुल अलग है। और वो क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट जो हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं वो एक रिफ्लेक्शन है। और फिर रिलीजियस प्रिंसिपल में 4 लाइक 4 हमने रिलीजियस प्रिंसिपल देखे थे, धर्म 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 काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म क्या है, पायस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ताकि वो उससे उनको लाभ मिले। फिर अर्थ क्या है, पैसे कमाना। और फिर काम क्या है, काम जो है हमारी डिजायर्स हैं। और
मोक्ष क्या है? लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। तो इससे रिलेटेड मैंने कल परसों जो मैंने अमोघ लीला प्रभु जी की क्लास सुनी थी, तो उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, तो ये चार भाई हैं और ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? राम जी धर्म को, लक्ष्मण जी अर्थ को, शत्रुघ्न जी काम को एंड भरत जी मोक्ष को। तो लक्ष्मण जी किसकी सेवा कर रहे हैं? राम जी की। और शत्रुघ्न किसकी सेवा कर रहे हैं? भरत की। तो अर्थ अगर धर्म की उसमें लगाया जाए तो वो अच्छी बात है। और उसी तरह काम को अगर हम मोक्ष की उसमें, एक हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? मुक्ति प्राप्त करने की, तो उसमें लगाया जाए तो ये चीज अच्छी है। और फिर अल्टीमेटली जब शत्रुघ्न जी भरत की सेवा कर रहे थे, और भरत किसकी सेवा कर रहे हैं? राम जी की। तो हमारा डिजायर जो है अगर मोक्ष का है, और मोक्ष से अगर हम वो क्या हुआ? धर्म हुआ, तो इसको हम प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, पर मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, अगर आपको समझ आया तो ठीक है। एट 45 वी लैंड, ताकि हमें चीजें पता भी चले। हाँ, तो ये है, वो मैंने स्क्रीन शॉट लिया था। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न एंड भरत। तो राम जी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लक्ष्मण जी अर्थ को, शत्रुघ्न काम को एंड भरत जी मोक्ष को। तो अगर काम जो है मोक्ष के उसमें लगाया जाए, हमारा डिजायर अगर मोक्ष प्राप्त करने का है, तो वो अल्टीमेटली क्या हुआ? धर्म हुआ। और इसी तरह अगर हम अर्थ जो है धर्म के कार्यों में लगाते हैं, तो वो भी क्या हुआ? एक तरह से भक्ति हुई। तो ये सारी चीजें को रिलेटेड है, और अल्टीमेटली इससे हमें क्या मिलती है? प्रेम और भक्ति। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो फिर हम एंड करते हैं सेशन को। ओके, थैंक यू माता जी। ठीक है, सो मुस्कान, यू कैन डू गुरु वंदना। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मुहि सावधाना माते जहर प्रसादे भाई ए भाव तोरिया जाए कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुख पद्म वाक्या चित्त ते कोरिया इख्या आरना कोरी हो माने आशा जहार श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमा गति हे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जाहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना कहा प्रभु करो दया देहु मोरे पद छाया ए विजास घोष त्रिभुवना प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव लोइलो शरणा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा। Translation: The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires.
He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him, ecstatic prema emanates. By him, ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of poor, and the Lord and master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most fallen. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Gurudev. Hare Krishna. Hari Bol. Thank you so much, Mataji, for joining. Pancha Kalpatarubhascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai.